Hello, good evening, Namaskar. I'm very happy to be here among all of you on this auspicious day of Jagannath Yatra. It is a great pleasure for me to be called by Krishna, and I'm fortunate to be called here to speak on a very important topic. It is always an important topic as far as uh, lifestyle matters and matters related to progress are concerned, because sustainability is, as it is becoming these days a matter of fashion, but it is the essence of life and lifestyle as such. To introduce myself, I'm Vanita Thakkar. I stay at Vadodara, Gujarat, and I have worked in the field of sustainability for around 25 years now. I am an engineer, mechanical engineer with a master's degree in thermal science from MS University of Baroda and a research background in renewable energy systems. And I have also been into other fields of work, like I'm an artist and I give programs. I'm a vocalist and a composer. And I write as well. I've written some poems and articles that can be found online. Um, so when Krishna contacted me to give this talk, this is my first time on Facebook Live. I was wondering about what I should speak about, and he had written to me that I could speak about other topics as well, since he is aware of my background. So I thought, let me talk about sustainability, which is so broad a topic that it touches every walk of life. And today being the Jagannath Rath Yatra, I thought it is good to talk about something which has a reference to the deity who is worshipped today. Jagannath ji, as we know, he is the considered as a form of Lord Krishna or Lord Vishnu, as per our mythology and our beliefs. And the role of Narayan or Lord Vishnu is to ensure the continuity of the creation, and in that way we can say that Lord Vishnu is the deity of sustainability. And so it is a very befitting, I think, tribute to Lord Vishnu if we talk about sustainability today. As regards my work in the field of sustainability, I would be focusing, as we know by the topic, on sustainability because of which is related to renewable energy systems, because renewable energy systems are those which help us ensure the continuity of the creation, because they are the green technologies and they help in ensuring that the environment remains safe when we are also getting the benefit of all the facilities that are required for a comfortable living. The problem that has occurred, as we all know, is that the resources that are available on earth, they have been exploited to such an extent that the assimilative capacities of the environment have got
exhausted, and so we are seeing different reactions that are coming out from the nature, which give us regular signals that we need to control our exploitation of the natural resources. So, to seek a solution to this problem that we have landed up into, the best solution comes from the use of those technologies which do the least harm to the natural ambience that can help us sustain life comfortably and fruitfully on this earth. And these technologies are the ones which are called renewable energy technologies, and they include, as we all know, solar energy technology, wind, biomass. In solar, we have solar thermal as well as solar photovoltaics. Nowadays, we see solar photovoltaics being promoted extensively and also accepted extensively. There was a time when it was difficult to convince people to uh, adopt solar photovoltaics, but now we have been able to come to the stage when solar photovoltaics has also become a common feature of households. So that in a way is a big achievement for us. So, and there are other technologies as well, solar thermal technology. We see most commonly the solar water heating systems that are used in uh, almost very widely used in most of the households in Gujarat at least, and in most of the states. We even have information that in many states they have made it mandatory to make use of solar water heating systems, and that is a very good sign because they indeed save lots of fuel when used on a mass scale. And then there are other industrial applications also of the solar water heating systems. Uh, uh, the ones that we use for domestic purposes, they are smaller scale and compact ones, small ones. But for industrial purposes, there are various uh, modifications and updations on the traditional smaller systems which help them work more efficiently under industrial conditions. So overall, the adoption of solar technologies as far as they are concerned, photovoltaics and solar thermal systems in the form of solar water heating systems is most common. But there are wide varieties of other types of systems as well, such as solar dryers, which can be very handy in the agricultural applications. I have seen them being used successfully in some projects at least, and if they are accepted widely, if they are promoted and brought out on a for usage on a larger scale, they can be really very useful for agriculture, for food processing industries, for pharmaceutical industries. There are so many applications in which the solar dryers can get a place. So we can think of them as the next upcoming technology as far as the next most widely used technology as far as solar thermal is concerned. My work in solar thermal was related to, sorry, some interruption. My work in solar thermal was also related to solar concentrator systems, and the solar concentrator systems are still on a very primary stage of their development. They are on a research stage, and during my tenure in academics for 12 years,
I had done quite a few such projects with my students who were pursuing their bachelor's and master's degrees, wherein the performance assessment models for the uh, solar concentrators were worked on. Also, there are other solar systems which are of great importance as far as their applications are concerned, but still they need to be promoted on a larger scale. One system that I had worked on was the solar tubular skylights. Tubular skylights were worked upon in one of my batches when I was working at uh, Charuset University, Chamba. And that system gave very good results on experiments as well, because that was an experimental work. We had prepared a model of skylight, and there was a model shelter also prepared as per the guidelines given for the standards for testing the um, you know working of lights, domestic lights. So accordingly we had prepared a chamber in which we tested the skylight. Now one may ask what a skylight is. So it was actually a simple kind of make in which a tube was prepared from aluminum which was highly reflective, and there was a dome placed on it that was transparent, and a dome placed at the bottom of it. The top was a transparent dome, and the bottom was a translucent dome which could diffuse the sunlight which was coming from it evenly and properly inside the shelter. So we mounted the skylight on the shelter. From the upper dome that was transparent, the light went inside and it got reflected from the reflective surface of the tube inside, and through the diffuser at the bottom the light came out and spread as if a bulb was glowing. So that was a good experiment. We even made comparison of the light quality that was coming into the chamber with the light that is available from the bulbs that are available in the market, and we got very encouraging results, and that we even presented in some conferences, and that experiment also got selected for publication in international journal, and it is available online if there is somebody who is interested in looking into it and working on it. It would be nice, and any queries are also most welcome. There were some solar concentrator systems, as I told you, Muni Sevashram Goraj, and some projects related to the concentrators which are towards the north of Baroda. There was an MNRE project in which thermic fluid to be heated for some vulcanization of rubber process was heated through the concentrators, and we were working on the model which would actually assess how good the performance of the system actually is, because that was the first system of its kind being installed in India. It was the first system of its kind, in fact, in Asia, that was getting installed, and a certain performance level was expected of the system, and we wanted to see how successfully, how properly the system was to work, and we had prepared a model for it, and that also has received some good recommendations on some research websites that can be also looked into. There were some exergy analysis models also for that, and energy analysis also. So
that is about solar concentrators. Solar water heating systems, as we know, they are in a way being used in different parts of India for about 30-40 years now, and so they can be said to be in the next stage of their development. But unfortunately, it has so happened that uh, we don't have properly compiled scientific recorded data of how well the systems have performed. We do get to know that they are doing well, they overall perform very well, but the real scientific procedure of seeing the development of the technology take place in the right direction is that we need properly compiled, recorded and analyzed scientific data which gives us a fair idea of the success or partial success or the failure of the technology. Actually, the technology has not failed, it is successful, but we need to justify it by scientific records. Due to some discrepancies that are there in the research culture in India, we are lacking in that sense. There are very good systematic studies that have taken place in China, in Spain, in Israel. I had come across several good papers in which these studies had been shown, but we couldn't come across any such study that has taken place in India. And when we want to see that these technologies get a widespread acceptance in a country like India, which has such a vast variety of uh, climates, we need to ensure that we have a proper uh, you know base of a proper foundation of studies that promote, that support that technology, and that somehow we have not gone in the right direction as far as that is concerned. And so such, if we want our renewable energy systems to really take up on a large scale, and that too with good efficiency and with proper support of uh, scientific research and basis, then we need to be very careful and very stringent about our uh, limitations that are prevailing in our research culture, which need to be overcome as fast as possible. Because while working on these systems, and I had even prepared one complete proposal for carrying out studies that would have helped to come up with such data and such kind of models which would help us put the systems right in the right perspective. It is not necessary that the systems would be 100% working. There can be certain drawbacks that need to be taken care of. Overall, we know that the systems are doing well, but then if I have one opinion, not opinion, I have one experience about a system, somebody else may have some other experience. We need to combine the experiences of all people from all backgrounds, from all kinds of working conditions, and then draw a conclusion about the generalized performance aspects of the system. We cannot just by the word of mouth, if we hear and we find that, well, this system is doing well, but then we need to quantify also the results, and we need to properly assess as to how much they have really worked in different working atmospheres. Because we have variety of climates as well as variety of industrial exposure environments. Variety of industrial units are there where they might have been put to use. There are some areas which are highly polluted. In Gujarat, we have a very dusty climate, especially in the summer. So, and then the water quality also matters.
So there are so many aspects about it which need to be taken care of while we compile scientific results and come out with proper compilation of how well the system has performed and how better it can go. And this this sort of a work culture, this sort of a research culture we should definitely develop. That is one point. Then there are also systems related to biogas, biomass. Some very good projects on bottling of biomass have taken place. We see them being operational in Muni Sevashram. Some of my students had worked on biomass bottling uh, in the South Gujarat region, and they had done some good project on it. Even in the concentrators that are there, they can be uh, paraboloid kind of parabolic trough kind of concentrators and dish type of concentrators. Both these concentrators are still in research state, as we know, and the trough type concentrators, they are more prevalent at present. There are some good concentrator projects which are into cooking. We see them in Muni Sevashram. In one ashram at Chennai, there is also one such system operative which is doing very, very well. Sorry. So, in cooking, the working of different concentrator systems has been found to be very good. But again, they are also the first generation of those systems, and we need to know properly about how well they have performed in order to see that the next generation of the system comes out to be better than what was there earlier, because there could be some aspects of it which need some kind of a modification or change. That has also taken place, of course. In Muni Sevashram we know that there are some systems which were earlier working on first of all there were concentrators which directly received the sunlight and focused it on the vessels, and the cooking was taking place. Then some systems were incorporated which made use of steam as a working medium, such that the concentrators heated up the steam and the steam was circulated in vessels that were uh, you know uh, special vessels that were made, jacketed vessels were made, and vessels which had tubes of through which the steam circulates, so that the operations like frying and roasting could take place. Very good jacketed vessels were prepared and cooking was done. Overcoming the limitations of steam, then thermic fluid was adopted. That also worked, and further development of those systems are to be done, and they are going on. So, if we get properly compiled data of how the systems fared, and if we go about systematically, scientifically seeing, assessing how the systems are working and what all best can be done with the systems, our approach, if it turns out to be more systematic, then we can have much more and more confident progress in the field than what we are having at present. So this is about the concentrator and solar thermal systems. Since I have worked more on solar thermal systems, I just gave a background of these solar thermal systems which I had come across. Apart from that, and biogas systems also I talked about, there was one more project. Sometime just a few minutes back, I saw a good presentation from I think it was Ms. Shagun, who was talking about houses made up of
क्ले हाउसेस, गीली मिट्टी, इट वाज टॉक्ड अबाउट। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। मेरा अपना भी एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसमें हमने घर में एसी न लगे और फिर भी घर के अंदर एक अच्छा कंफर्ट लेवल बना रहे, दैट वे इफ वी कैन वर्क आउट अ सिस्टम दैट आई हैड डन, that was during my master's project, and for that also I had done some practical work also was done, and some optimization modeling also was done. So उस तरह के जो घर हैं वो हमारे आज की जो जीवन शैली है उसके एक बहुत ही, ऐसा कह सकते हैं कि उन जिन घरों में प्राकृतिक हवा का आना जाना और जो सनलाइट जो हमको मिलती है, सूर्य का प्रकाश हमारे घरों में आता है, वो जहाँ तक हो सके अगर हम डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश ही पा सके अपने घरों में, तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे जो आज यहाँ संशोधक जो हैं हमारे, उनके द्वारा ये पता किया गया है कि हमारे देश में खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें जो भी बिजली का उपभोग होता है, जो भी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें 70% जो है वो लाइटिंग सिस्टम्स के द्वारा होता है। लाइटिंग सिस्टम्स हमारी 70% अगर इलेक्ट्रिसिटी लेती है, इसका मतलब है कि हमारे घरों में लाइटिंग को मेंटेन करने के लिए जो नेचुरल इनफ्लो ऑफ लाइट जो होना चाहिए वो बहुत ही कम है। हमें अपनी लाइटिंग सिस्टम्स को सुधारने की बहुत ही आवश्यकता है। अर्थात हमारे जो घर बने, आवर शेल्टर्स, they need to be properly ventilated such that natural sunlight comes into them, and that will be better for the health of the residents also. And that is why I had gone in for the project on tubular skylight, because skylight के द्वारा क्या होता है, जहाँ पर खिड़की नहीं है, ऐसी जगह, अगर ऐसी जगह है जहाँ खिड़कियाँ सनलाइट नहीं ला सकती है, तो स्काईलाइट को हम छत के ऊपर या फिर किसी साइड की दीवार पर लगाकर हम सनलाइट को घर के अंदर गाइड कर सकते हैं और उसको उसी फॉर्म में, उससे उजाला हम पा सकते हैं। तो घर में हमको राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले। हमारे यहाँ, हमारा देश ऐसा है कि हमको सनलाइट की कमी है ही नहीं। मैं यहाँ सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी बहुत समय तक जुड़ी रही, अपने सोलर एनर्जी के जो भी कार्य रहे उसमें, उसकी वजह से। और उसी दौरान इनफैक्ट मेरी कृष्णा से परिचय हुआ था मेरा, और वो सोलर सिस्टम्स के बारे में कुछ गाइडेंस लेने के लिए मेरे पास आया करता था। तो जो सोलर की जो सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ, जिस तरह से हम उपयोग में लाते हैं, उनके बारे में हमारे यहाँ जब कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो बात होती थी, तो यूरोप के देशों से भी एक्सपर्ट्स आया करते थे। तो वो अक्सर हमको कहते थे कि हमारे देशों में इतनी कमी है सूर्य प्रकाश की, और फिर भी हम किसी तरह से भी जितना भी हमें मिलता है उसका भी पूरा उपयोग करके हम सूर्य प्रकाश से आधारित ऊर्जा, उसी से आधारित लाइटिंग हम पाने की इतनी कोशिश करते हैं। और हम यहाँ जब भारत में आते हैं, हम देखते हैं कि इतना ना केवल सूर्य प्रकाश और सब तरह के भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी इतनी प्रचुरता होने के बावजूद भी हम जितना उनका अच्छा उपयोग कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती थी मुझे, और ये हमारे लिए और ज़्यादा इसका महत्व इसलिए है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो पारंपरिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग को पूरी तरह से जीवन में उतारने के बेसिस पर ही बनी हुई है। हमारे जो हमारी जो संस्कृति के जो सिद्धांत हैं वो हमें
प्रकृति के साथ सामंजस्य रख के किस तरह से जिया जाए वो हमें बताते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि हमारे ही देश में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम सही तरह से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, और इतना अधिक हमारे यहाँ प्रदूषण भी आजकल हो रहा है, इतने अधिक दूसरे प्रदूषण से संबंधित, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो, हमारी ज़मीनों में भी बहुत प्रदूषण लगा हुआ है। उसकी वजह से हमारे यहाँ हर क्षेत्र में हम देखते हैं मुश्किल आ रही है। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पास जो एक सही रास्ता है, जो हम जिसे अपनाकर हम अपनी जो पहले की जो हमारी संस्कृति है वो जिन मूल्यों पर आधारित थी, जिस जीवन शैली की उसमें बात की गई थी, अगर हम उसे पाना चाहते हैं तो हमको वापस प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके कर सकते हैं। धीरे धीरे इस तरफ अभी झुकाव बढ़ रहा है। ऐसा समय था जब हम हमेशा, हमारे लिए ये सोचना भी कि सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम घरों पर लगे, हम तभी चाहते बहुत थे कि ऐसा हो, लेकिन होता नहीं था, हो नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल पड़ रही थी। पर अब हम ऐसे समय में तो हैं जब सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स डोमेस्टिक यूजेज में बहुत वाइड स्प्रेड हो गए हैं। तो ये एक हमारे लिए सफलता की बात है। दूसरे संसाधनों का भी इसी तरह से और अच्छे से उपयोग बढ़ता रहे, ये हमारे देश की प्रगति को हम सही दिशा दे सके, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं बात कर रही थी अगेन मिट्टी के घरों की जो बात हुई थी, तो वैसे एक और सिस्टम जो थी वो हमारी सिस्टम थी जिसमें पहली एक थी जिसमें हमने सूर्य प्रकाश को हम घर में लाए ट्यूबुलर स्काईलाइट के थ्रू। इसके भी पेपर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। दूसरी एक सिस्टम थी हमारे, जो दूसरा एक साधन है जिसके द्वारा खासकर गर्मियों में बहुत ही अधिक बिजली की खपत हो जाती है, वो है एसी। आजकल हम सब जगह एसी चलते हुए देखते हैं। तो एयर कंडीशनिंग न करना पड़े, ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर न यूज़ करना पड़े, और मकान को इस तरह से बनाया जाए, उसमें कुछ इस तरह के उपकरण लगाए जाएं, कुछ ऐसी प्रणालियों का उपयोग किया जाए कि जिससे हमारा जो घर का वातावरण है उसमें जो टेम्परेचर राइज है वो कम से कम हो, और विदाउट द यूज़ ऑफ एसी या विथ मिनिमम यूज़ ऑफ एसी एक थर्मल कंफर्ट बना रहे। इसके लिए भी जो सिस्टम्स आती हैं वो भी दो तरह की हो सकती हैं। एक है पैसिव सिस्टम, जो कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जब घर बनाया जाता है तब उसके ओपनिंग्स की जो दिशा है और उसमें जो हम जो जिन साधनों से घर को बनाते हैं, जैसे ईंटें हैं या हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो हम होलो ईंटों को यूज़ करेंगे, होलो ब्रिक्स जिन्हें बोलते हैं। तो हवा जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, उसकी वजह से जो हीट रिटेंशन है ऑफ द वॉल्स, वो हीट रिटेंशन, जो हीट स्टोरेज ऑफ द वॉल्स, दैट विल रिड्यूस, एंड लाइक जो होलो ब्रिक्स के अंदर के जो होलो पार्ट्स हैं, दे विल एक्ट एज एन इंसुलेशन, सो द हीटिंग अप ऑफ द होम्स विल बी लेस। तो इस तरह के सामान को यूज़ करना घरों को बनाने के लिए कि जो हीटिंग का इफ़ेक्ट जो है उसको कम करे, और ऐसे उसके इस तरह के रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स आते हैं उनका उपयोग करना, ये सब ऐसी बातें हैं कि जिनका इस तरह के संसाधन है जिनके कॉस्ट ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमारा जो माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम
जो एक बार यूज़ करते हैं, एक जो ट्रेडिशन चला रहा है उसी को, उसमें से हम निकल कर अलग एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, उसके लिए जो हमारा ओपननेस है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि द हीट लोड ऑफ द शेल्टर comes down, and that makes the shelter more comfortable even without the usage of, or with less usage of air conditioning. तो ऐसी ये when we make use of such building material while making the building, that the comfort is ensured, that is one way. And we can make use of proper directions while designing and making the openings, that is another way. For example, we keep more of the openings towards east and north. That is, even in our Vastu Shastra it is said that we should keep openings towards north and east, and that is very scientific, because that gives good air cooling, natural cooling, and good sunlight also, and the heating effect is minimized. If we have too many openings towards the west, then the heating of the shelter becomes very prominent, and then we require more external cooling devices. So we need to keep the openings in the right direction. South side openings, they give maximum uh, heating effect, because we are staying in a country, that is, we are staying in a location that is in the northern hemisphere. So our heat infiltration comes from the southern side. The reverse will be there for the people staying in the southern hemisphere. So having openings in the south is not advisable, but then we have lots of space constraints these days. So it may not be possible to avoid openings in the western and in the southern direction, and that makes that adds to the thermal discomfort of the shelter. So to overcome such problems, there can be certain low cost and uh, very simple kind of easy to make natural systems that can help you reduce the thermal load. So in many cases they may even help you avoid the use of an AC, and in other cases they may reduce the load on the AC considerably, so that there can be a good savings on power consumption. So such systems are also there. I had worked upon one such system in which the thermal comfort was ensured by embedding a piping system on the roof, and water was circulated through the system. The water circulation used to carry away the heat from the roof, and the heated water used to get cooled in a heat exchanger that was called buried pipe heat exchanger, and that means it is buried at such a depth in the earth that it would get the temperature differences on the surface don't affect the temperature at that level. So it is a cool steady temperature depth of the earth. The heated water goes to that depth, gets cooled, and it gets recirculated into the piping in the roof. So that way the heat load from the roof was carried away, and about 30 to 40% of the heat load in a shelter is due to the heating of the roof. So if other means are taken care of, and if we use this simple cooling system for carrying away the heat load from the roof, then the heat loads on the shelter get reduced considerably. So this kind of systems help in maintaining natural comfort in the shelters. I am talking about shelters. That means they can be houses, they can be commercial setups, they can be other kind of shelters also. So
domestic, commercial, and industrial. All types of shelters are included in it. So this kind of systems have to be worked on. I have seen one or two such systems installed in and around Baroda. I have studied them, I have seen them work. There have been people who have really experimented with how the layers of material that compose the roof of the shelter are, you know, innovatively made such that the heat loads get reduced. Such kind of works are being done, and I have been fortunate enough to have been associated with such works and worked on them. I have presented papers and I have written in the journals about such works. So these works should get more of encouragement and they should be accepted more widely to ensure that the quality of shelters that we have in our uh, urban setups, especially nowadays. Even we were hearing Ms. Shagun mention that in rural areas also people it has become a customary kind of belief that if you are living in a cemented house, then that is a symbol of achievement and prestige. So, encouraging natural habitats without compromising the strength and the other aspects of the shelter. It is possible. Earlier, we come across such beautiful architectural, models that were prevalent in our country earlier. So we need to adopt those local and um appropriate technological models for our shelters also, because whatever we try to imbibe from others, we need to take care of the uh, aspects of its applicability in our environment for our requirements. If something looks enchanting to us, fine, but whether that system will work in our conditions, how good it will work or not, we have to assess that properly and then adopt it. Otherwise, we can keep our appreciation till appreciating it at that place itself. We need not adopt it. This kind of uh, proper education, a proper cultivation of mind in our among our people, I think is very much necessary, so that what we call, we hear about a self reliant India, आत्मनिर्भर सक्षम भारत हम अगर चाहते हैं, तो उसके लिए जो रास्ता है वो हमारे इन सब टेक्नोलॉजीज़, ऐसी इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को हम अपनाएं जो कि हमें हमारी जो पुरानी प्राकृतिक शैली जो है जीवन की, उस तक वापस ले जाए। इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ हमें सचमुच आत्मनिर्भर और सक्षम बना पाएंगी। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो हमने कहा, आपने यहाँ भी दूसरे भी जो हमारे वक्त आ गए हैं उनसे भी आपने काफ़ी कुछ सुना उसके बारे में। तो उनका समुचित अगर हमारे समाज में, हमारे लोगों में उनका प्रचार प्रसार हो और उनको स्वीकार किया जाए, उन्हें जीवन में अपनाया जाए, तो इससे हमको, हमारे समाज को बहुत लाभ होगा। तो दूसरी एक बात यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार मुझे जब टॉक के लिए बुलाया जाता है कि आप हमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताएं या हमारे साथ अपने बात को शेयर करें, और मुझे भी वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब हम अपनी बात लेकर जाते हैं और दूसरों के अनुभव से भी हम सीखते हैं, तो तब जाके हमारा जो ज्ञान है वो और आगे बढ़ता है। एक निरंतर एक प्रक्रिया होती है ये, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं या फिर हम ऐसे लेख पढ़ते हैं जिसमें हम
अनुभव जिन औरों का जो होता है, इस तरह के शोध कार्य से हम रूबरू होते हैं जिसमें हमें दूसरों के शोध कार्य के बारे में भी जानने को मिलता है। तो इससे हम अपना भी हमारा अपना भी फ़ायदा होता है, और जब हम अपने अनुभव दूसरों को कहते हैं तो उससे शायद उन्हें भी फ़ायदा होता ही है। तो ऐसे में जब मुझे जाने का मौका मिलता है तब मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अ, हमारे यहाँ जो परंपरा रही, ऐसा कहा जाता था कि ये एक धर्म के अनुसार मान्यता है और उसे हम उसका पालन करें। और ऐसा बहुधा होता भी था कि लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था की वजह से, जैसा कहा जाए उस तरह से लोग अपनी जीवन शैली को रखते थे। इसमें हमने देखा कि प्रकृति के प्रति आदर हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है। हम प्रकृति के पूजक भी हैं, क्योंकि प्रकृति के हर रूप का हमारे शास्त्रों में पूज्य भाव से पूजन के साथ उनका सम्मान किया गया है। तो इसका एक कारण यह था कि हम जिस भी जो भी हमारे लिए पूजनीय होता है, जिसका हम सम्मान करते हैं, उसे हम बहुत संभाल के रखते हैं। तो उसके प्रति हमारा जो हम उसके दुरुपयोग के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा एक हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह से एक प्रथा बना दी थी कि जीवन में हर कोई प्रकृति का सम्मान कर कर आगे बढ़े। तो वो जब जब जैसे जैसे ये जो भाव है वो कम होता गया, वैसे वैसे प्रकृति के प्रति हमारा जो आदर भाव है, उसके प्रति उसे संभालने का जो हमारा एक कर्तव्य भाव है, वो कहीं धीरे धीरे कम होता गया। तो ये जैसे जब जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के बारे में और उनके एडॉप्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम प्रकृति को संभालने की, उसका सम्मान करने की जो भावना है हमारे में, वो बढ़ती है। तो ये हमारी संस्कृति का जो पुराना स्वरूप है, उसकी तरफ हम इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के द्वारा बढ़ें, ये बहुत ही हमारे लिए इच्छनीय होगा। दैट विल बी रियली डिज़ायरेबल एंड यूज़फुल फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। तो मुझे यहाँ अपनी बात कहने का, अपनी जो भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर पाई हूँ, उसको शेयर करने का मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला। इसके लिए मैं कृष्णा कौशिक और उसकी टीम की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। कुछ सालों पूर्व वडोदरा में एक बार एक रिन्यूएबल एनर्जी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें उसका जो थीम सॉन्ग था, उसे लिखने का मुझे सुअवसर मिला था। और चूँकि वो मेरा अपना बहुत ही मेरे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय था और जिसके प्रति मुझे बहुत आस्था है, ऐसा विषय था, इसलिए बहुत मन से एक गीत मैंने लिखा था, ऊर्जा गीत उसका शीर्षक है, एनर्जी सॉन्ग। उसमें सब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स है, सौर ऊर्जा है और जल ऊर्जा भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में आती है, क्योंकि वो नॉन कन्वेंशनल है, उसका इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, एबंडेंटली अवेलेबल और क्लीन एनर्जी सिस्टम है। तो वो कन्वेंशनल होने के बावजूद भी वो पुनः प्राप्य ऊर्जा में ही आती है। तो जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, तो उनके वो जिन सिद्धांतों पर इन सब ऊर्जा की प्रणालियाँ काम करती हैं, उनका एक
झलक में मैंने विवरण करके वो गाना लिखा था। तो YouTube पर वो गाना आप सुन सकते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसी भी प्रथा रही कि जो भी कुछ हम सिखाते थे हमारे अ, बच्चों को, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, और हमारी जो शिक्षण प्रथा रही उसमें भी ओरल ट्रेडिशंस थे। तो बहुत जो गूढ़ और जिनका बहुत विस्तार से विचार और विमर्श किया जाए, जिन पर ऐसे जो भी विषय होते थे उनको छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर उन्हें एक गुरु से, एक गुरु के द्वारा एक अपने शिष्यों को देकर ऐसे सूत्रों के द्वारा जीवन के सिद्धांतों को सिखाया जाता था। तो इस प्रथा में गायन के द्वारा शिक्षण देने का बहुत ही एक अच्छा तरीका था हमारे यहाँ। और ऐसा कहते भी हैं कि गाने के द्वारा जो हम सीखते हैं वो हमारे मन में कहीं अंदर तक जाता है। जो हमने बालगीत पहले सीखे होते थे वो आज भी हमें याद आते हैं, उनका हम पर प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। तो गाने के द्वारा जो हमारे सिखाने की प्रथा थी उस प्रथा को भी रिवाइव किया जाए। सूत्रों के द्वारा, गाने के द्वारा जो प्रथा थी सिखाने की, वो प्रथा भी एक तरह से रिवाइव हो अगर, तो शिक्षण का स्तर भी और आगे और ऊपर आ सकता है। संगीत जो है वो गहराई तक मन को और हृदय को छूता है, इसलिए संगीत के द्वारा जो भी हमारे एटमॉस्फेयर हैं उसमें, और हमारी जो भी बात हमें कन्वे करनी होती है उसमें भी जो एक इफ़ेक्टिवनेस आती है वो संगीत के द्वारा हम उसको और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक साइंटिफिक कारण है इसका कि हमारे कान के अंदर इनर ईयर जो हमारा है उसमें सीलिया नाम के माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं। जब हमारे गाना संगीत के जो स्वर हैं जो वो हमारे अंदर रहे उन सीलिया को वाइब्रेट कराते हैं, मतलब उनकी जो पहुंच है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स आर सो रिच दैट दे reach till the inner ear in the cilia and they cause vibration of the cilia, and that is how they penetrate deeper into the being, not only physiologically, otherwise also. Music has definite sorry music has very definite impact on the mind and soul. So we need to promote the right kind of music. The right kind of music, I mean, by that I mean healthy music, because the way we have junk food nowadays, there is junk music as well. So as far as possible we should try to promote healthy music which benefits the heart and soul of a human being. So और हमारी जो संगीत परंपराएं रही वो इस तरह के संगीत को हमेशा प्रमोट करने की थी कि जो हमारे मन और हमारी आत्मा को ऊंचाइयों तक और अपने अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाए। तो इस तरह के संगीत का हमारे बीच होना और हमारे बीच उसका प्रचार होना, ऐसा भी अगर हम करें तो ये हमारे देश के सांस्कृतिक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको रिवाइव करने के लिए वो बहुत ही हमें उपयोगी होगी। इस दिशा में भी मेरे से अपनी तरह से जितने हो सके हैं मैंने प्रयास किए हैं। मेरा YouTube चैनल भी है, आप उस पर जाकर मेरे गाने सुन सकते हैं। और इस तरह का जो भी कार्य करता है मेरी शुभकामनाएं, और अगर मुझसे कुछ हो सके ऐसा हो उनके साथ मिलकर तो मेरा उनका पूरा सहयोग रहता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसे हर कार्य के प्रति मेरी शुभकामना और सहयोग भी है।
और इसके अलावा आप अगर जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के बारे में कहा गया, जो भी मैंने कुछ कहा आपको, वो भी अगर उन सिस्टम्स पे काम करने के लिए भी यदि कोई मेरा सहयोग चाहिए तो मोस्ट वेलकम। मेरी कुछ जब मैं पढ़ाया करती थी और अभी भी मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो उस समय मेरे विद्यार्थियों को जो फंडामेंटल्स हैं इन सिस्टम्स के वो सरल और कम शब्दों में अच्छे से समझ में आ जाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहता था। तो उसकी वजह से मैंने ऐसे काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस तैयार किए थे जो जिससे कि कम समय में और एक फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो सीख सके, क्योंकि इंजीनियरिंग में एज वी नो जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होता है, और मैंने ऐसी जगहों पर पढ़ाया है जहाँ स्टूडेंट्स आते थे जो बहुत दूर से आना होता था उन्हें, तो बंकिंग की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा रहती थी, और हम चाहते थे कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को उनका जो भी सिखाना है वो हम करा सकें। और ये भी होता था कि मेरा ये प्रयास हमेशा से रहता था कि जो भी कुछ विद्यार्थी सीखे वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर या ऐसे रट्टा मार दिया और पेपर पे उतार दिया और डिग्री ले ली चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो कुछ सीखा उसे उसका रियल लाइफ में आपकी जो भी कुछ सिस्टम्स जिन पे आप काम करेंगे उनमें उनका कितना महत्व है, क्या स्थान है उनका, वो किस तरह से आप उन कॉन्सेप्ट्स को आप उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझकर आप आगे बढ़िए। तो इसके लिए मैं इस तरह से उनके स्टडी मटेरियल तैयार कराती थी कि जिससे उनको जो बहुत भारी लगने वाले भी विषय हों वो जितने हो सके वो आसान हो जाए उनके लिए। तो ऐसे जो भी मैं उसके बाद जो भी नोट्स तैयार हुए थे उन सब के अभी धीरे धीरे कुछ कुछ प्रकाशन हो रहे हैं, तो उसका भी जितने लोगों को लाभ मिल सके तो वो भी मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ this is about the different areas in which I have worked in, is a little bit about music and of course sustainability के sense में renewable energy, and I have also told you about something in the field of literature which relates to renewable energy which I have been able to do. So many thanks to all those who have heard me and who are going to hear me after this, because there are so many people who called me and told me that it may not be convenient for them to come and see it right at this time, but maybe they will see it at a later stage. So I hope it has they will enjoy this and it has been good. I am foreseeing quite a few of my friends who will be looking into this, and it would be nice to hear from them. And probably they due to this lockdown we haven't met for a long time, so we have been into the house only for so longer time. So maybe seeing me many people will be happy. They have been telling me we haven't seen you for a long time. So here that is I'm very glad that I got an opportunity to be with you all. Krishna, thanks a lot. Soumya, thanks, and goodbye to everybody. Namaste.